So, hello everybody. Welcome to the EduphoreIAS, the live Hindu class. Today we are starting with first series questions as usual. So, first is consider the following statements, and the first is CBDCs. First statement is CBDCs, that is central bank digital currencies, are a digital form of paper currency. Okay. Second statement, it is the same as fiat currency and exchangeable one-to-one with a fiat currency. Now, fiat currency means a legal kind of currency, has a legal backing of the central bank of the government. So therefore, somewhat you can say that both the statements are correct based on yesterday's this CBDC related discussion as well, that our RBI governor yesterday has commented on the CBDC, especially with its application related to the cross-border transactions. So both the statements are correct here. The easy question, C is the right answer. Second question was Aditya L1 will function as a space weather station. Space weather station. Understanding space weather is an international issue rather, and the data from the spacecraft will aid in making models and predicting storms in advance. You need to comment in 250 words for a 50-marker question. So what should be the structure of this answer? Structure would be based on the same, that is IBC rule, that is intro, body and conclusion. Since this question is for 15 marker, so at least 4 to 5 lines you can have this intro part. Okay, at max, not more than that. Okay, so first of all, yesterday we discussed that of course, Aditya L1 mission, this is the first solar mission from Indian side, sun mission of course. So therefore, first of all, Lagrangian point L1 mentioned in the mission itself, the name, that is Aditya L1. So L1 is what? L1 is of course Lagrangian point. Yesterday we discussed that this was discovered by mathematician Joseph Louis Lagrange. That is, L1 is one of the 5 points located approximately 1.5 million kilometers away, where the gravitational forces of the sun and the earth are in equilibrium. Hence, a spacecraft placed at L1 orbits the sun at the same time as earth and affords an uninterrupted view of the sun. Okay, so this could be of course this should form the part of your body, but before that, how we need to introduce this? So in introduction, you can say that somewhat you can say that Aditya L1 will help somewhat understand the dynamics of the sun and how solar variability impacts the climate on earth and affects the space weather. Fine, this variability affects the space weather. So since this is a first mission, solar mission from India, we are expecting a lot, and of course this mission is going to answer the many of the questions which has been yet not answered. Okay, that's it about the intro part. So in body part, number 1 point that you mentioned about the L1 itself, that is like engine point 1. Then after that, the next point you can mention about the different types of payloads that this mission is having on board, like we discussed yesterday about the suit, that is ACUIT, then solar ultraviolet imaging telescope. Then after that, we also discussed about another payload that is on board to this mission, and that is somewhat related to the SOLEX, that is solar low energy X-ray spectrometer. Then another was Helios, fine, and so on. So of course we can mention this as well. For example, the solar ultraviolet imaging telescope will observe the UV radiation from different zones of the solar atmosphere. The onboard intelligence system will detect any sudden appearance of bright spots, fine, such as solar flares. Solar flares, yesterday we defined as well. क्या होते हैं? A sudden burst of high energy visible lights, X-rays, you can say UV rays or even gamma rays on the disk of the sun. Okay. Apart from that, the changes in solar's wind density, speed and direction is called space weather, and this mission is selected for studying this space weather as well. So therefore, this mission Aditya L1 will be functioning as a space weather station, right? So this is how you can mention this. Apart from that, you can also in the conclusion part, you can mention, of course, on the affirmative note,
ठीक है, पॉजिटिवली कुछ कंक्लूड कर सकते हो आप. दैट इज फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग स्पेस वेदर is an international issue and the data from Aditya L1 will definitely aid in making models and predicting storms in advance, right, in the upcoming times. So therefore, this is how you can conclude your answer. This should be the complete structure of the answer, that is in the form of intro, body and conclusion. Now let us switch to our discussion. So today's Hindu we are starting with, that is September 6th, and the front or the first page. The first page would more or less would be related to the Bharat and India. So yes, starting from left side first. So Supreme Court bench reserves verdict in Article 370 abrogation challenge. So finally हियरिंग कंप्लीट हो चुकी है, जो कि काफी टाइम से चल रही थी, एंड सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजर्व कर लिया है. मींस didn't pronounce his verdict yesterday only, but it will pronounce in the upcoming days. ठीक है. उसके बाद भारत रिप्लेसेस इंडिया इन G20 इनवाइट फ्रॉम प्रेसिडेंट. ठीक है. सो गवर्नमेंट सोर्स डिनाई प्लान टू फॉर्मलाइज ओनली वन नेम फॉर द कंट्री. तो गवर्नमेंट ने डिनाई किया, जैसे कि कल न्यूज़ में पूरे दिन आपने देखा होगा, तो ये चल रहा था कि सरकार जो है वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके इंडिया दैट इज भारत वर्ड मेंशन इन आर्टिकल 1 फाइन इज द यूनियन ऑफ स्टेट. सो वहां पे हो सकता है कि भारत कर दे दैट इज इंडिया इंस्टेड ऑफ इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया. ठीक है. सो इस नाम के पीछे, क्योंकि जो प्रेसिडेंट की जो दिस इनवाइट है उसमें मेंशन है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत नॉट इंडिया. सो इस वजह से काफ़ी इसके ऊपर चर्चा हो रही है. प्लस अपोजिशन का भी कुछ एंगल है, आप देख सकते हो. तो क्योंकि अपोजिशन की जो ब्लॉक है उसका नाम इंडिया है, तो अपोजिशन वाले ये कह रहे हैं कि जो सरकार है, जो पार्टी है, वो घबरा गई है एंड देयरफॉर इट वांट्स टू चेंज द इंडिया फ्रॉम भारत. रूलिंग पार्टी लीडर्स वेलकम यूज ऑफ भारत. ठीक है. सो बस ये है, इसमें कुछ खास हमें पढ़ने की जरूरत नहीं. सो केरला हिल स्टेशंस, हाई कोर्ट ऑफ केरला देख सकते हो, मोड्स कैरिंग कैपेसिटी स्टडी, कि किसी भी नेचुरल जो दिस हिल साइड एरियाज हैं या इनकी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, स्पेशली जो हिली एरियाज हैं, उनकी जो कैरिंग कैपेसिटी हो कितनी है उसकी स्टडी की जाए. सेकेंड इज द केस फॉर पोल्स इन जम्मू एंड कश्मीर. यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन कराने की बात चल रही है. एंड नेक्स्ट इज of course Indian team announcement for the World Cup, coming World Cup. Okay. Apart from this, here will block funds if governor keeps interfering, said by West Bengal CM Mamata Banerjee. So she has threatened economic blockade of higher educational institutions if governor सीवी आनंद बोस कंटिन्यू टू इंटरफेयर विद देयर फंक्शनिंग. जैसा कि हमने देखा था कि बंगाल एंड बिहार में रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ वीसीज, जो गवर्नर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जो वीसीज अपॉइंटमेंट रिलेटेड मैटर्स हैं उसमें सिर्फ वीसी की ऑफिस के द्वारा जो भी नोटिस रिलीज की गई है उसकी मान्यता दी जाएगी, उसी की वही मान्य होगा, वैलिड होगा. So restrictions in just a small area, don't listen to rumors, said by Delhi police. ठीक है. Entire Delhi is open, clubs only in part of New Delhi. ठीक है. तो पुरानी दिल्ली खुली है, न्यू दिल्ली में सिर्फ कब है, जो भारत मंडपम, प्रगति मैदान. Delhi has more e-buses than any other city today. Okay. So from states, you see more or less politics only. ठीक है. Apart from this, spiritual strife between Swaminarayan sect and the other Hindu outfits. तो Swaminarayan sect and other Hindu outfits के बीच में spiritual strife देखने को मिल रही है हमें. And you can see this the new mural in pink at the Sarangpur Hanuman temple. तो religious leaders जो हैं the Shri Kastbhanjan Dev Hanumanji Mandir in Salangpur, Botar district, managed by the Swaminarayan sect Vadtal branch, removed the controversial murals of Lord Hanuman kneeling before and praying with folded hands to the 19th century seer Shahjanand Swami. ठीक है. तो शहजानंद स्वामी एक्चुअली फाउंडर हैं जो बेसिकली स्वामीनारायण जो सेक्ट है उसके.
known by his followers as Lord Swaminarayan. ठीक है, तो ये सारा इश्यूज था कि हनुमान जी जो कि फोल्डेड हैंड स्वामीनारायण की जो मूर्ति है उनके सामने फोल्डेड हैंड में खड़े थे, तो उस मूर्ति को इन्होंने रिमूव कर दिया है। तो बस यही सारी इश्यूज हैं। So it is a battle of superiority, and seers of Swaminarayan have been trying to distort Hinduism and its practice and trying to show that he is above all. Said by Bharti Bapu, a prominent Hindu seer in Gujarat. ठीक है, तो ये है कि हिंदू मतलब ये लोग ऑफ कोर्स स्वामीनारायण सेक्ट जो है वो स्वामीनारायण जो फाउंडर हैं इस सेक्ट के सहजानंद स्वामी, उनको दिखाने की कोशिश कर मतलब पोर्ट्रे कर रहे हैं कि हाँ he is everything for us, God and all. So somewhat but दूसरे जो सेक्ट है हिंदू के उनको ये चीज़ पसंद नहीं कि हनुमान जी उनके सामने हाथ जोड़ के खड़े हों। This is what the issue is all about. यहाँ पे देख सकते हो जैसा कि हमने देखा था ईडी ने गिरफ्तार किया था वी सेंथिल बालाजी इन अ करप्शन केस इन तमिलनाडु। तो जो मद्रास हाई कोर्ट है इसने ये कहा कि मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो, क्योंकि अभी भी ये मिनिस्टर है बट कोई पोर्टफोलियो नहीं है, इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेवेसिटी। सीधी सी बात है, पता है करप्शन केस में अंदर तो गिरफ्तार किया गया, फिर भी मिनिस्टर की जो टैग है वो अभी लगी हुई है, अभी भी ये मिनिस्टर है। Center should remove 50% cap, raise quota by 15 to 16% to include more communities, said by NCP लीडर शरद पवार। ठीक है, क्योंकि मराठा डिमांड कर रहे हैं, मराठा कम्युनिटी डिमांड कर रिजर्वेशन की, एंड उसके लिए पैनल भी बना दिया है महाराष्ट्र की सरकार ने, हमने कल ही देखा था इसको। ओके Kerala High Court seeks to explore carrying capacity of hill stations. Okay. तो मैसूर में एक फेस्टिवल चल रही है, एलिफेंट रिलेटेड फेस्टिवल। अपार्ट फ्रॉम दिस politics only. India versus Bharat, raw attempt to distort history. So politics only. Okay. So this is the first article, the case for elections in Jammu and Kashmir. इसको हम अभी डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं बिकॉज गवर्नमेंट ने कह दिया है कि एफिडेविट में भी सुप्रीम कोर्ट में यही कहा था कि अभी सर्टेनिटी के साथ हम नहीं कह सकते कि हाँ वी आर रेडी टू कंडक्ट to conduct elections in Jammu and Kashmir, but somewhat we cannot say with certainty that when we are going to actually have this election. So therefore this one is important, the implications of the expansion of BRICS. So what the writer author is saying in this article, so कि जोहानिसबर्ग में जो इस बार की मीटिंग थी 15th मीटिंग ऑफ दिस ब्रिक्स समिट एक्चुअली टुक प्लेस इन जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी गए थे वहाँ, एंड आफ्टर दैट द न्यू थिंग्स विच टुक प्लेस इन दिस मीटिंग वाज स्पेशली रिलेटेड टू द एक्सपेंशन ऑफ दिस ब्रिक्स ब्लॉक। ठीक है, जहाँ पे कि 6 नए मेंबर्स बने हैं जिसको कि हम काफ़ी बार डिस्कस भी कर चुके हैं, बट स्टिल आज थोड़ा सा एंगल अलग है तो इसको भी हम देख लेते हैं। Will be a kind of revision only, the implications of the expansion of BRICS। कि BRICS की जो एक्सपेंशन हुई है उसकी इंडिविजुअल कंट्रीज के लिए प्लस ग्लोबल ऑर्डर के लिए क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। ठीक है, तो क्विकली 15th ब्रिक्स समिट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें यह अनाउंस किया गया कि 5 मेंबर ग्रुपिंग दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका हैड इनवाइटेड 6 न्यू मेंबर्स, Iran, Saudi Arabia and United Arab Emirates from West Asia, 3 West Asian countries, Egypt and Ethiopia from Africa and Argentina from Latin America। ठीक है, तो ये 6 न्यू मेंबर्स बने हैं, टोटल नंबर इज 11 now।
ये भी रिपोर्ट किया गया था इसमें कि 14 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने कि इंटरेस्ट शो किया है इन ऑर्डर टू ज्वाइन दिस ब्लॉक, बट आउट ऑफ दैट अराउंड 22 कंट्रीज they have submitted formal applications for joining, and out of that 6 have already joined. So from 2009 BRICS has met annually at summit level, लगातार इसलिए 15वीं है, 59, ठीक है, 23, so first 24 but 23 times 23 चल रहा है, तो ऑफ कोर्स 15 में तभी ये 15th BRICS समिट थी, ठीक है. It has spawned two major institutions इसके हैं, NBD नहीं NDB, that is New Development Bank, ठीक है, and the other is Contingent Reserve Arrangement, CRA. Basically this is for meeting the contingency or emergency like situation, especially supporting countries facing short term balance of payment like pressures or the crisis, ठीक है, जैसा कि recent में times में हमें श्रीलंका में भी देखने को मिला था, यहाँ यू कैन से इवन कि पाकिस्तान टू सर्टेन एक्सटेंट, ठीक है, कि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतनी नहीं बची है कि आप अपनी इंपोर्ट्स जो पेमेंट है वो मीट कर सको. सो अब तक एनडीबी ने, न्यू डेवलपमेंट बैंक, हैज ऑलरेडी फाइनेंस्ड 96 प्रोजेक्ट्स वैल्यूड एट $33 billion. BRICS members have been united in their dissatisfaction with the West-dominated international institution that had emerged after the Second World War. बिल्कुल ठीक बात है कि जो भी ये कंट्रीज हैं समवॉट, बट हमारी जो इंडिया का रिलेशन है वो ठीक है वेस्टर्न नेशंस के साथ भी, बेट यूएस और यूरोपियन नेशंस, बट समवॉट ब्रिक्स नेशन है, इन्होंने they are dissatisfied, even we are dissatisfied with the United Nations, especially the Security Council, because we want to be a permanent member of this United Nations Security Council. So even we are not satisfied with these institutions led by Western countries, especially US. For example, the World Bank, the IMF, International Monetary Fund, the United Nations and its various bodies, particularly the Security Council, and more recently the World Trade Organization. So at Johannesburg, even the UN Secretary General Antonio Guterres described these Western institutions, as reflecting yesterday's world, ठीक है. So even कि United Nations के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने भी इन जो वेस्टर्न लेड इंस्टीट्यूशंस हैं, इंक्लूडिंग यूएन जिसके कि वो खुद सेक्रेटरी जनरल हैं, इन सबको उन्होंने क्या कहा, दे आर द yesterday's, they are reflecting the yesterday's world. The United States has led the Western Alliance in both the political and economic areas. So BRICS challenges this West-led world order. बिल्कुल ठीक बात है. It promotes intra-BRICS economic and political cooperation, builds institutions outside Western control, and agitates robustly for wide-ranging reforms to accommodate the presence and interest of emerging economies. So BRICS का जो है, that is, it is BRICS, of course, न्यू डेवलपमेंट बैंक जब of course जब इस्टेब्लिश हुआ तो यही था कि जो वर्ल्ड बैंक है उसके क्या करें, एज एन ऑल्टरनेट उसको देखा गया. इसीलिए आप देखते हो कि 96 प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट फाइनेंस कर चुका है, वर्थ $33 billion. So the Johannesburg Declaration, that is related to the BRICS summit, of course, BRICS summit, categorically asserts that the members' strategic partnership will be directed at achieving a more representative, fairer international order. So clearly mentioned है कि जो partnership है, strategic partnership, that will be directed towards achieving a more representative and fairer international order. So the recent expansion of BRICS membership has shaped a grouping that is aligned in terms of global perceptions and interests, and collectively provides considerable economic clout to the enlarged conclave. So with this expansion, proposed expansion, BRICS, because 1st of January next year से ये लोग formally members बनेंगे, so that's why it is referred as proposed expansion. The BRICS will now have, after this expansion, 46% of world population, while its share of global GDP will go from 31.5% in PPP, that is purchasing power parity terms, to 37%. ठीक है, far ahead of the GDP of 13.7% of the G7 developed nations. ठीक है, कि G7 से भी अब BRICS के 11 जो members हैं वो उनकी जो GDP in terms of at PPP जो है, in terms of PPP ज़्यादा हो जाएगी. इनकी 13.7 है, लेटर से 31%, उनकी 37, means by 6% GDP of BRICS member 11 members would be far greater than the G7. So the 5 core members account for 23% of the global exports and 19% of the global imports. With the new members, now the total exports of this BRICS member 11 members would be somewhat
23 and 3.7, that is 26.7%, and global imports would be equivalent to 22%, 19 plus 3%. The major impact, however, will be on the energy sector. Out of the global oil production of about 19 million barrels per day in 2020, the earlier 5 BRICS members had accounted for 20% of global output only, but now this will be more than double, that is 42%. क्यों? ये इसलिए क्योंकि मेजर जो 6 न्यू मेंबर्स हैं उसमें देखोगे तो मेजरली मोस्ट ऑफ देम आर oil producing states. For example, Saudi Arabia, UAE, Iran, all of these three are major oil producers. ठीक है, crude. An addition of geostrategic value as well. How? Now, those from West Asia are already closely tied to BRICS members. 35% of Saudi oil production goes to China and India. Russia, already a major oil supplier to China and India, is now looking at Brazil as a market. So सबके लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ है. Despite sanction by the United States, Iran has increased oil production, and today it is producing somewhat in the range of 2.2 million barrel barrels per day. ठीक है? Most of it's going to China. Egypt and Ethiopia are an important presence in the strategically important Horn of Africa and Red Sea. So एटलस पे ये जरूर आप लोकेट करना लोकेशंस. हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सी कंट्रीज हैं? एरिट्रिया, इथियोपिया. ठीक है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका मेजरली 3 कंट्रीज. सो हॉर्न ऑफ अफ्रीका प्लस रेड सी भी आपने लोकेट करना है. ये 2 लोकेशंस इंपॉर्टेंट है. While Argentina is the second largest economy in Latin America after Brazil. So rather than looking at the issue being raised at BRICS summit and other meetings, Western commentators have this. तो वेस्टर्न कमेंटेटर्स ने क्या ही कहना था इसको, इस ब्लॉग को ही इन्होंने क्या कहा है, जो वेस्टर्न नेशंस है, commentators have disparaged the grouping as having no shared vision and being a talk shop with no worthwhile achievements. ठीक है, but he is saying, the author is saying that these criticisms have little substance, and BRICS leaders have met over 15 years and every time have overcome their internal divisions and competitions to issue a consensual declaration. ठीक है, so somewhat author is denying this, disparaging or negating of the grouping by Western nations or commentators as just being a talk shop. In the Johannesburg Declaration, while several paragraphs call for wide-ranging reforms in international organizations, the bulk of the document focuses on intra-BRICS cooperation. ठीक है कि ठीक है, कुछ पैराग्राफ्स में बात की गई है related to the Western nations and wide-ranging reforms in the international order, but majorly the focus जो document का है of BRICS, this Johannesburg Declaration, that is about the intra-BRICS cooperation, कि जो ये 11 members हैं इनके बीच आपस में कैसी cooperation हो. The declaration also reflects the shared views of its members on several political issues. For example, the centrality of the United Nations, the problems in West Asia, especially in Syria, Yemen, Palestine, the Arab Peace Initiative, and the Iran nuclear agreement, and also the war in Ukraine and global terror. So all of these has been discussed and being the major focus areas of this declaration. Now, outlook for regional and global affairs. The new BRICS members, particularly those from West Asia, naturally fit into this political and economic framework. From 2020, both Saudi and UAE have shrugged off the US yoke and shaped independent foreign policy paths for themselves. Yes, सऊदी अरेबिया एंड यूएई की जो क्लोजनेस थी, स्पेशली सऊदी अरेबिया की जो यूएस के साथ, वो कहीं ना कहीं ओवर द टाइम दूर होती जा रही है, कम होती जा रही है. ठीक है, सो ऑफ कोर्स दिस is a testament, or this somewhat proves the fact that somehow these countries now this exercising their own independent foreign policies. ठीक है, not dependent on US. और भी कुछ यहाँ पे mentioned है, जैसे कि ईरान एंड आर्क राइवल सऊदी अरेबिया, इन दोनों के बीच इंटरेक्शंस होनी स्टार्ट हो गई है. ठीक है, एंड द चाइना ब्रोकर्ड अकॉर्ड विद ईरान इन मार्च दिस ईयर एज वेल. The UAE has also normalized ties with Iran and is focusing on expanding its maritime footprint across the Gulf, Gulf of Aden, the Red Sea, and the Horn of Africa. Again, the Gulf of Aden, including with the Red Sea and Horn of Africa. Please locate these places on your map at least for better clarity. So Iran's entry into the BRICS is
propitious. Propitious is basically something which is good, in favor. Besides its role in the energy sector, it opens up opportunities for accelerated regional economic cooperation. Besides the revival of moribund, which has been a dying state, north-south international north-south connectivity, which is connecting even India with the passing through Iran, Azerbaijan, Russia, and even this up to the Eastern European continent. तो प्रोजेक्ट्स थ्रू द चाबहार पोर्ट का आपको पता होगा कि यहाँ पे 2 टर्मिनल्स इंडिया ऑपरेट करता है, ठीक है, बेस्ड इन ईरान, with which India is associated. While Western writers continue to harp on the emerging global binary divide and the new Cold War, India and other BRICS members reject this short-sighted view and insist on asserting their strategic autonomy in a multipolar world order. बिल्कुल ठीक बात है. आज भी जो वेस्टर्न राइटर्स हैं, दे आर हार्पिंग ऑन द इमर्जिंग ग्लोबल बाइनरी डिवाइड एंड द ऑफ कोर्स न्यू कोल्ड वॉर, ठीक है, बिटवीन लेट अस से यूएस एंड चाइना और रशिया, एंड बट इंडिया एंड अदर ब्रिक मेंबर जो हैं दे रिजेक्ट दिस शॉर्ट साइडेड और मायोपिक व्यू एंड इंसिस्ट ऑन asserting their strategic autonomy in multipolar world order, with member nations demanding that their voices be heard and their interests respected. It is not surprising then that a recent media report described the Johannesburg summit as a turning point in modern history. Okay, so this summit could be a turning point in modern history. A good insightful article, we should keep tab on this. Now this we have decoding the न्याय संहिता बिल. हमने काफी बार इसको डिस्कस कर लिया है कि न्याय संहिता बिल जो है, जो 3 सरकार आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करके न्यू हिंदी बेस्ड नेम्स जो बिल सरकार ला रही है, अभी तो स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दिया गया, हो सकता है कि अपकमिंग विंटर सेशन में हमें ये देखने को मिल जाए. तो उसके रिलेटेड सो मोर और लेस चीज़ें मोस्टली वही हैं, बट यहाँ से 2-3 चीज़ें जो हमारे काम की वो हम यहाँ से जरूर एक्सट्रैक्ट करेंगे, एंड दैट इज डिकोडिंग द न्याय संहिता बिल. इनिशियली ऑथर ये कहते हैं कि ये अच्छा किया है, सरकार की प्रेरोगेटिव है कि द गवर्नमेंट बाय इंट्रोड्यूसिंग द लोक सभा 3 penal bills which is says aims to decolonize the Indian justice system has rightly exercised its prerogative. ठीक है, इस सरकार ने अच्छा किया, अपनी प्रेरोगेटिव को यूज किया है. In this case we need to particularly focus on 3 points. हाँ, ये 3 points हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट है. The first is that the penal law making and reform are serious issue which requires deep deliberation and empirical validation. ठीक है, कि जो penal law making and reforms हैं, these are the serious issues which requires deep deliberation and discussion, empirical validation. The second is we must keep in mind the diversity of consideration of substantive and procedural laws. Now two types के laws mention किए गए हैं, substantive and procedural, and engage with the 2 sets separately. But होते क्या ये दोनों? So substantive law is govern actually how people behave. They define criminal offenses and specify punishment, whereas procedural law जो है, they actually talks about the procedure that is to be followed by the investigative agencies. Laws aimed at enforcement agency that are to be provide safeguards and due process even to the worst offenders. The third major point is we need to realize that penal laws are an instrument for actualizing and propagating a wide variety of interests as per the constitutional vision and dominant ideology. Okay, which interests need protection and priority is a matter of democratic process. Okay, so in view of these issues, so these 3 जो points हैं हमारे लिए बेहद important है. सो पार्टिसिपेशन फ्रॉम द पीपल, जो नेक्स्ट इशू है कि लोगों की सहभागिता इसमें जरूर होनी चाहिए. सो द कॉलोनियल पिनल लॉ दैट इज आईपीसी 1860 है, दैट इज कॉलोनियल इन नेचर, अंग्रेजों लेके आए थे, ठीक है, इनेक्ट किया था, तब से यूज में है. It replaced not because it needs to be replaced not because it was inherently flawed, but because it lacked participation from the very people for whom it was meant. So लोगों की उसमें अंग्रेज लेके आए थे, तो उसमें इंडियन सिटीजन्स के ऑफकोर्स जिसको कि गवर्न करना था इस आईपीसी के थ्रू, उनकी पार्टिसिपेशन एज सच नहीं थी. So there is an imposition of foreign ideas and values. Therefore, wide and diverse debate that includes the participation of the governed, that is people, citizens, should be integral to this exercise. Yes.
जो थॉमस बाबिंगटन मैकॉली थे, जो ये लेके आए थे, ही वाज द फर्स्ट लॉ दिस मेंबर टू द गवर्नर जनरल काउंसिल, जिन्होंने के ड्राफ्ट किया था आईपीसी। तो थॉमस बाबिंगटन मैकॉली हैड सेड इन द हाउस ऑफ कॉमन्स, द लोअर हाउस ऑफ यूके, दैट द बेसिस ऑफ अ यूनिफॉर्म कोड ऑफ लॉ फॉर इंडिया should be uniformity when you can have it, diversity where you must have it, and but in all cases certainty। ठीक है, तो इन्होंने तीन चीजें की बात की थी। फर्स्ट, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए जो लॉ हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। सेकंड, डाइवर्सिटी होनी चाहिए, एंड थर्ड एंड मस्ट, सर्टेनिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों एलिमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो अपकमिंग पिनल लॉ है, दैट इज इनशुइंग पिनल लॉ, भारतीय न्याय संहिता बिल, दैट इज IPC in its Hindi form, ठीक है, it should be aimed at achieving the target of equal and uniform application and should be structured in precise terms to impart maximum certainty. And the idea of according justice or nyaya may be the ultimate end, but every kind of criminalization means encroachment on liberties and decimation of freedoms। ठीक है, कि हर टाइप के एवरी काइंड ऑफ क्रिमिनलाइजेशन जो है, इट ऑल्सो मीन्स एनक्रोचमेंट ऑफ पर्सनल लिबर्टीज। एंड एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव रिसेंटली विटनेस सच अ शिफ्ट इन रिस्पेक्ट टू अटेम्प्टेड सुसाइड व्हिच फ्रॉम एन ऑफेंस अंडर सेक्शन व्हिच फॉर्म्स एन ऑफेंस अंडर 309 ऑफ इंडियन पिनल कोड इज ऑन द वे टू बिकमिंग अ मेंटल प्रॉब्लम अंडर सेक्शन 115 क्लॉज 1 ऑफ द मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। कि जो अटेम्प्ट टू सुसाइड है, it has been treated as a kind of mental health problem under section 115 clause 1 of the Mental Health Care Act 2017। Likewise, in the Joseph Stein versus Union of India, very important case, ठीक है, the Supreme Court struck down section 497 of the IPC, that is offense of adultery। Therefore, there is a need to conduct a wide-ranging social audit of what constitutes undesirable behavior of the citizens। ठीक है, कहते हैं कि अटेम्प्ट तो कुछ हुआ है, इन ऑर्डर टू इम्पार्ट ब्रेविटी, द टेंडेंसी ऑफ रिटेनिंग एंड एडिंग न्यू ऑफेंसेस टेंड्स टू ऑफसेट द एडवांटेजेस। फाइन, फॉर एग्जांपल, आफ्टर द इंडियन penal code IPC, many special penal laws have been enacted to deal with the new and emerging crimes which could be kept out of the Bharatiya Nyaya Sanhita। Furthermore, serious crimes such as organized crime and terrorism could be located in existing special laws or a new composite law as suggested by the Malimath Committee। This is important। Women and children, so ये कहते हैं कि कोई भी हम लॉ बना रहे हैं, बट अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15(3) फंडामेंटल राइट्स क्लॉज 3 स्पेशल प्रोविजंस मेंशन्ड है फॉर चिल्ड्रन एंड वीमेन स्पेशली, जिसके लिए सरकार अलग से कुछ अफर्मेटिव एक्शंस ले सकती है। एंड आर्टिकल 51 क्लॉज A सब क्लॉज E renounces practice related to derogatory to the dignity of women, and that offences against women and children has been accorded first place in the category of offences in chapter 5 of the bill, जो भारतीय न्याय संहिता बिल है। But ये कहते हैं कि we are shocked that we get a rude shock when we realize that in the proposed offence of rape under clause 63 of this upcoming bill, sexual intercourse between a man and his wife if the wife is above 18 is not a rape। ठीक है, तो जैसे कि पहले डिबेट चल रही थी कि हाँ मैरिटल रेप्स रिलेटेड इश्यूज डिबेट्स गोइंग ऑन, डिक्लेयर करना चाहिए इवन कि दिस इज रेप अंडर मैट्रिमोनियल अलायंसेस एज वेल। तो इसको कहते हैं कि इस चीज़ से बाहर रख के कहीं ना कहीं ठीक नहीं किया गया है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर मेनी थिंग्स ही इज मेंशनिंग। सो नॉट विदस्टैंडिंग एनीथिंग contained in any other law for the time being into force, the provision of this act shall apply to all matters concerning children in need of care and protection and children in conflict with the law। तो जो juvenile justice act 2015 की बात करें, that is applicable for the juvenile, that is the age group of less than 16 years and so of course less than 18 years जो adult नहीं है। So the proposed penal law has certain decisive departures from the colonial chapter scheme that tried to arrange offences as per the priority of interest of the ruling class and push the interests of the body and property below offences against the state and other supportive institutions। तो कहते हैं कि certain decisive departure हमें इसमें देखने को मिल रही है from the colonial chapter scheme that actually tried, because colonialism अंग्रेजों ने
ऑफ कोर्स उनकी अपनी खुद की इंटरेस्ट को ऊपर रखा था, एंड बॉडी की इंटरेस्ट ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी वर समवॉट put below the offenses against the state and other supportive institutions. But the bill has accorded precedence to bodily interest by placing them in chapter 6 just before offenses against the state. Okay, so this is again a good sign for good thing about this bill, but he is raising some question. Is it possible to draw some inferences from such a shift? The acid test would lie in the responses to the following inquiries. First, will the reforms fulfill the constitutional vision enshrined in the Article 13(2), that is, prohibition on laws against fundamental rights? And second question, will the law uphold the principles of autonomy and equality? And third is, will it further the fraternity guaranteed by the preamble? So these are the three questions is living for the policy makers, whether you are going whether going to answer these questions or not, whether this bill is actually going to answer these questions or not, will be based very much depends on how this bill is going to be different from the earlier colonial IPC. Now next is laws governing forests of the northeast. Okay, so why did the Mizoram Assembly pass a resolution against the Forest Conservation Amendment Act 2023, and why is the Forest Conservation Act not applicable in Nagaland? So what are the special constitutional provisions for Nagaland and Mizoram? एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 2023 की हम बात काफी कर चुके हैं, हमने गोडा बर्मन केस की भी बात की जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि फॉरेस्ट की जो डेफिनेशन है दैट इज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट. ठीक है, सो ये सारा कुछ अब हुआ क्या है कि तो एफसीए अमेंडमेंट दोबारा से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है. फॉर कंजर्वेशन 2023 इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ अच्छे से. सो आज हमें ये जानने की जरूरत है कि जो मिजोरम जो नागालैंड की असेंबली है उसने इसके अगेंस्ट क्यों बिल पेश किया है. ठीक है, why Mizoram Assembly passes a resolution against the Forest Conservation Amendment Act 2023. But before that हुआ क्या है कि on August 22nd the Mizoram Assembly unanimously passed a resolution opposing the recent Forest Conservation Amendment Act 2023 to protect the rights and interests of the people of Mizoram. ठीक है, बट हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इन्होंने ये क्यों कर पाए हैं ऐसा, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ही इनको कहीं ना कहीं अलाउ किया गया है. जो इन्होंने किया है वो कहीं ना कहीं अलाउज है इनको अंडर स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन व्हिच हैज बीन ग्रांटेड अंडर आर्टिकल 371A एंड दैट इज रिलेटेड टू द नागालैंड. 371A grants special protection, constitutional protections to the Nagaland. Then 371G grants special protection for Mizoram, and it prohibits the application of any law enacted by Parliament of that impinges on the Naga and Mizo, these two tribes, especially majority tribes in these two states, customary law and procedure. ट्राइब्स की अपनी खुद की कस्टमरी लॉज एंड प्रैक्टिसेस होती हैं. सो अगर इन पे कोई भी पार्लियामेंट के द्वारा भी अगर दिस पास किए गई अगर कोई बिल है या एक्ट है, अगर इनकी कस्टमरीज लॉ को अगर कहीं ना कहीं इम्पीज कर रही है, उसमें इंटरफेयर कर रही है, तो ये जो असेंबलीज हैं वो इसके अगेंस्ट जो है वो प्रपोजल ला सकते हैं. ठीक है, एंड ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड इट्स रिसोर्सेज. सो कस्टमरी लॉ रिलेटेड हो सकता है, ओनरशिप ऑफ लैंड हो सकती है बिकॉज दे आर ट्राइबल पीपल, सो ट्राइब इज रिलेटेड, एंड इवन टू सर्टेन एक्सटेंट ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड एंड इट्स रिसोर्सेज. बट 1996 में जैसे कि हमने बात की कि सुप्रीम कोर्ट ने इन अ गोडा वर्मन केस, फेमस केस है रिलेटेड टू द फॉरेस्ट, दिस लैंड said that not only include forest as understood in dictionary sense, but also includes any area regarded as forest in the government record irrespective of the ownership. Irrespective of the ownership, क्यों ownership चाहे ट्राइबल लोगों के पास है चाहे किसी के पास भी है, बट वो भी फॉरेस्ट के पार्ट कहे जाएंगे, वो भी फॉरेस्ट कहे जाएंगे. ठीक है, सरकार के अकॉर्डिंग. तो ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने. 10 इसकी वजह से क्या हुआ कि इस जजमेंट ने, गोडा वर्मन केस की जजमेंट ने 1996 की जो फॉरेस्ट दिस कंजर्वेशन एक्ट है, इसकी कहीं ना कहीं एप्लीकेशन है वो अनक्लास्ड फॉरेस्ट में भी ये जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है वो अनक्लास्ड फॉरेस्ट में भी के केस में भी एप्लीकेबल है. ठीक है, अनक्लास्ड फॉरेस्ट को जो किसी भी तरीके से सरकार ने उसको अभी तक क्लासिफाई नहीं किया है. ठीक है, तो ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने. ठीक है, सो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो
सो एप्लीकेबल है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। इससे हमें यही पता लगता है कि ये तब तक एप्लीकेबल है जब इन चीजों पे इंपिंज ना करे कस्टमरीज लॉ, ओनरशिप रिलेटेड या लैंड ट्रांसफर्स एंड ऑल ऑफ ट्राइबल पीपल। ठीक है, रिमेंबर, बट FCA is applicable in the rest of the northeast in Meghalaya and Tripura, the 6 scheduled areas within these states, and in Arunachal Pradesh, Sikkim and Manipur. 6th schedule actually relates to the special power given to the for governing purposes of the tribal areas, tribal hills and all. So remember, especially in दो नागालैंड मिजोरम ने इसको अपोज किया है, so बाकी जगह applicable है. So what is RFA especially? That is, तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट हमने देखा था, हमने उसकी बात भी की थी, एंड इनफैक्ट 1927 से हमने एवोल्यूशन भी देखा था कि 1927 में सबसे पहले अंग्रेज लेके आए, ठीक है, एंड उसके बाद फिर सब्सिक्वेंटली हमने इसको। सो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है क्या, सबसे पहले तो हम यही समझ लेते हैं। ओवर मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन डाइवर्टेड नेशन वाइड अंडर FCA, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980. FCA exists to deforest the forest under the Indian Forest Act 1927 or its state versions. In 1996 गोडा बर्मन केस, जिसमें कि डेफिनेशन चेंज की वाइडर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, thus extending the FCA to unclassed forests as well. Fine. So these are the recorded forests but not notified as forests. तब इनको unclassed कहते हैं, क्लासीफाई नहीं किए गए हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम देखें तो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया रेंजेस फ्रॉम 34.21% in Assam to 82.31 in Sikkim, with Mizoram having 35.48%. so सबसे ज़्यादा अगर देखोगे तो सिक्किम में ये आपके फॉरेस्ट अनक्लास्ड वाले देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाट इज FRA एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, दिस फॉरेस्ट राइट्स एक्ट एक्चुअली। सो इन द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, पूरा बड़ा नाम है, शॉर्ट में इसको FRA बोल देते हैं, recognition, that is Forest Rights Act 2006. Forest land include unclassified forest, undemarcated forest, existing or deemed forest, protected forest, reserve forest, sanctuary and national parks. So this complied with the 1996 Supreme Court कि चाहे जो मर्जी हो सब कुछ फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है, ठीक है, अनक्लासिफाइड हो क्लासिफाइड हो डजंट मैटर, ठीक है, एंड दिस गोज इन लाइन विद द जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सो however, none of the northeast states have implemented the FRA except for Assam and Tripura, ठीक है, FRA Forest Rights Act. The reasons include the FRA being irrelevant as communities, clans, chiefs and individuals own most of the land, that their rights are already being enjoyed, and a lack of forest dwellers who are totally forest dependent, ठीक है। सो यहाँ पे बाकी अपार्ट फ्रॉम असम एंड त्रिपुरा बाकी के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ये एप्लीकेबल नहीं है, वो आई मीन इम्प्लीमेंटेड नहीं है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कि जो लैंड है उसकी जो है वो इंडिविजुअल प्राइवेट ओनरशिप है एक्चुअली, ठीक है, सरकार की लैंड नहीं है, बिकॉज ट्राइबल लोग हैं तो उनकी खुद की ओनरशिप है, ठीक है। So the Nagaland Assembly as required under Article 371 is yet to decide whether it wants this law or not, ठीक है, but proposal pass कर दिया है under this. So how can forest then be protected? The Environment Ministry mandated Forest Rights Act implementation and prior informed consent of the Gram Sabha in 2009 admit a forest diversion proposal, ठीक है, कि forest को divert किया जा सकता है for other purposes as well. The responsibility was delegated to the district collector, who ironically also headed the district committee that issues the FRA titles. तो ये देख रहे हो, I mean conflict of interest kind of है कि district collector को ये right दी गई to admit a forest division proposal. The responsibility was delegated to the district collector, who also happened to be the head of the chairman of the district committee that actually issues the FRA title, ठीक है। The collector's certificate of FRA compliance in the in principle stage 1 forest clearance was shifted to stage 2 final clearance, but the ministry's 2022 forest conservation rules eliminated compliance with the FRA before final approval altogether. इस second stage से पहले ही इसको eliminate कर दिए compliance को. Instead, it said that the state government shall issue order for diversion assignment of so state government को ही rights दे दी ministry ने. Taking this further, states can formulate and take legal measures to ensure mandatory fulfillment of FRA Forest Rights Act 2006 before recommending a forest diversion proposal and ensuring Gram Sabha consent before handing over forest land. So state government जो है वो ये formulate या steps ले सकते हैं before having the consent of Gram Sabha and even before handing over such forest to for any other purposes or let us say diverging the same.
The Ministry of Tribal Affairs (MOTA) can also issue legally enforceable direction under FRA or even enact a separate law to recognize and settle forest rights when forests are diverted for other purposes. Okay? So this way the states and the Tribal Affairs Ministry have a way to provide tenurial security to forest dwellers and protect the forest. ठीक है, सो इस तरह से सारा कुछ मेंशन है इसमें. फाइन. नेक्स्ट टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, द वेरियस स्ट्रेटजीज ऑफ द वैक्सीन डिप्लोमेसी. एक न्यू पेपर, रिसर्च पेपर है एक्चुअली. सो इसमें ये कहा गया है पेपर में कि द ऑथर्स आर्ग्यू दैट ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री 3 non-Western powers like Russia, China and India dominated the international vaccine aid. आपको पता है हमने वैक्सीन मैत्री के थ्रू काफ़ी कंट्रीज को more than hundreds of countries we distributed this vaccine. So Suzuki, Mao and Yang and Shiming 2023 पेपर जो है Political Economy of Vaccine Diplomacy explaining varying strategies of China, India and Russia COVID-19 vaccine diplomacy. ठीक है, तो हमें डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पता होना चाहिए. सो रशिया की जो टेक्नोलॉजी थी ट्रांसफर की, सबसे पहले स्पुतनिक वैक्सीन लेके आई रशिया. सो दिस हैज 2 advantages of this technology transfer. First, a country with homegrown vaccines can use technology transfer to either promote sales when its vaccines have long global credibility. And second is because technology transfer is welcomed by many developing countries striving to secure vaccine supply and to develop their pharmaceutical industry. It can also be used to enhance soft power of the giving country, that is of Russia. तो स्पुतनिक वैक्सीन आप सबको पता होगा, इवन कि इंडिया में भी ये वैक्सीन यूज की गई थी. ठीक है. इंडियाज मैसिव डोनेशन. सो इंडिया ने, the paper notes that country was producing 60% of the world's vaccine even before the pandemic. So India's vaccine diplomacy was characterized by mass production of Western invented vaccines, prompt bilateral donations and large scale sales to bilateral buyers and multilateral COVAX initiative. ठीक है. सो पहले से भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है ऑफ कोर्स ऑलमोस्ट 60% ऑफ ग्लोबल वैक्सीन जो है इंडिया में प्रोड्यूस होती थी. बट इसके बाद इंडिया वाज क्विक एट रोलिंग आउट लार्ज स्केल बायलैटरल प्रोग्राम्स कॉल्ड वैक्सीन मैत्री, वैक्सीन फ्रेंडशिप विद मोर देन 90 कंट्रीज स्विफ्टली अप्रोचिंग इंडिया. नेबरिंग कंट्रीज गॉट प्रायोरिटी एक्सेस टू इंडियाज डोनेशंस, द पेपर साइट्स. ठीक है. तो देख सकते हो नेपाल को भी हमने अराउंड 1.1 मिलियन डोजेस दिए थे डोनेशंस के रूप में. ठीक है. But the geopolitical interest was not India's only consideration. Also important was the need to cover the cost of manufacturing. So the sales versus donation conundrum was resolved. Thus, India concentrated donations on countries with which it has strong geopolitical and economic ties, but it sold a much larger sum to relatively wealthy countries beyond its geopolitical reach. So इस तरह से हमने अपनी जो वैक्सीन डिप्लोमेसी थी उसको रन एक्सरसाइज किया. कैसे कि जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है, जैसे नेपाल को हमने डोनेशन दी, तो कुछ कंट्रीज जिनके साथ हमारी स्ट्रेटेजी के यहाँ नेबरिंग हमारी कंट्रीज हैं, सो उनको हमने डोनेशंस के रूप में देने की कोशिश की, जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक टाइज इनके साथ है, और बाकी कंट्री जो डेवलप्ड वंस हैं उनको हमने सोल्ड की. ठीक है. सो दिस इज व्हाट द हाउ द इंडिया एक्चुअली यूज दिस वैक्सीन डिप्लोमेसी. चाइना की बात करें तो चाइना कॉस्टली इन्वेस्टमेंट. द पेपर पॉइंट्स ऑफ द चाइनाज वैक्सीन डिप्लोमेसी इज द कॉस्टलीस्ट विथ ट्रेमेंडस इन्वेस्टमेंट इन वैक्सीन डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. Though it arranged its clinical trials, sales and donation across the developing world, it provided preferential access only to African and ASEAN countries. ठीक है. सो कहीं ना कहीं यहाँ पे इनइक्वालिटी देखने को मिलती है चाइना के साइड से. क्यों? द रीजन इसने फोकस, चाइना ने फोकस की उन कंट्रीज पे जो कि BRI की प्रोजेक्ट में शामिल है. While its vaccine aid has been mostly bilateral, the geopolitical rivalry between China and India in South Asia meant that Pakistan became the first and the largest beneficiaries of China's vaccine aid. ठीक है. तो फायदा हो गया पाकिस्तान को. Case study of Brazil. The paper concludes with an interesting observation about how the BRICS countries are intertwined in the complex structure of vaccine enterprise. For instance, when Russia received a large order from Brazil, it outsourced production to China and India. So जब रशिया को लगा कि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है तो इसने आउटसोर्स कर दी, अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी प्रोडक्शन टू इंडिया एंड चाइना. एंड दिस इज हाउ द कंट्रीज हैव बीन एबल टू एक्चुअली mutually help each other. China on its part had conducted clinical trials in Brazil and Russia, while it also supplied API, active pharmaceutical ingredients, to Brazil. So it had done the same for India for Covishield production as well. And India has exported Covishield to Brazil and South Africa. So such interdependence
the authors write, can at least in the short term mitigate outright conflicts between rising powers. बिल्कुल ठीक बात, ठीक है. सो इस आर्टिकल को भी आप ब्रिक्स वाले से रिलेट करके देख सकते हो, ठीक है, कि हाउ इवन the conflicting interests or conflicting countries, or each countries are not sharing good bond can even, cooperate in such emergency like situations. Okay, now the mysterious fact, what is the agenda for, okay, India, parties, politics only. Indo-Pacific and China map on agenda as PM leaves for Indonesia, that is Jakarta. ठीक है, तो ये फोकस है. Xi Jinping escaping G20 summit, a deliberate signal to India and West. हो सकता है बिल्कुल. The decision by the Chinese president conveys Beijing displeasure with the current state of bilateral ties with Delhi and with what it sees as the politicization of G20, which China believes should be limited to economic issues. ठीक है, बिल्कुल. चाइना जहाँ पे ठीक है वहाँ पे उसके हिसाब से चलो तो सब बढ़िया है, ठीक है. कोई भी आप इंडिविजुअल भी अगर एक ले लो तो मेरे हिसाब से कोई चलता है तो बढ़िया है, ठीक है. ओके, तो लीगल एक्सपर्ट्स अभिषेक मनु सिंघवी जी जो है सीनियर एडवोकेट, इन्होंने कहा है कि इंडिया एंड भारत इंटरचेंजेबल एंड कैन बी यूज्ड इन ऑफिशियल इनवाइट, ठीक है. दैट्स नॉट अ बिग इशू. So in second action or second maneuver, you can say by IST-RAC, that is ISRO Telemetry Tracking and Command Network, Bengaluru, Aditya L1 enters new orbit. So yesterday we discussed about the this orbit maneuvering, and वहाँ पे मैंने कहा था कि orbit change, new orbit. Actually, so maneuvering is actually because changing of the orbits. So this is how the second time this has happened after 2-3 days. Now, central government has signed MOU, Memorandum of Understanding, with the Adobe to train children in classrooms. Adobe will provide schools across the country with free access to Adobe Express Premium. ठीक है, सो ये ध्यान रखना आप लोगों ने. यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ऑफ कोर्स इसको साइन किया होगा, दैट्स अ कॉमन सेंस, ठीक है. देख सकते हो ये बात हम कर चुके हैं ऑलरेडी. Now from the world page, we have Myanmar won't be allowed to lead ASEAN in 2026 in below 2 generals. बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि वहाँ पे जनरल्स की रूल है. नो, इलेक्टेड गवर्नमेंट को इन्होंने हटा दिया था. तो ASEAN 2026 में जो है वो म्यांमार लीड नहीं करेगा. नॉर्थ कोरिया स्कीम में मीट विद पुतिन इन रशिया दिस मंथ, ठीक है. सो ये भी देखने को मिल सकता है. यूएन ने वार्न किया इजराइल को कि एक्सपेलिंग एरिट्रिया जो कंट्री है उसके लोगों को एन मास इन मैसिव स्केल इज अनलॉफुल. FM flags threats to financial system from cryptocurrencies and tax havens countries, ठीक है. उसके बाद August services PMI देखें तो it has shown momentum but somewhat tad slower, ठीक है. So PMI is to 60.1 in August from July 13 year high of 62.3, ठीक है. तो 62 से 60 पे आ गया है PMI services, so it's a tad below, of course कम है, that's not that much. Okay, what else? So finally we are on the sports page. तो ये देख सकते हो वर्ल्ड कप की स्क्वाड जो है इंडियन टीम ने डिक्लेयर कर दिया है इंडियन टीम के लिए बीसीसीआई ने. तो ये है हमारे स्क्वाड. So that's it as far as today's Hindu analysis is concerned. Before we stop, let us quickly have a look at the today's this analysis based questions. I think okay, so these are the questions for today's practice, and first is special constitutional protections under Article 371A relates to which of the following states? Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura. Very easy question.
Second is the recent Johannesburg summit is termed as a turning point in modern history. You need to critically examine this statement for 10 marker in 150 words. Fine. That's it from my side. If you have any query, anything, put the same in the comment section. Until then, take care, keep revising, and stay tuned for tomorrow's Hindu analysis. Thank you.